एक बार फिर लैके चलते हैं सुखना लेक चंडीगढ़ जिथे एयरफोर्स के वालों अज अपनी ताकत विखाई जा रही है क्योंकि भारतीय एयरफोर्स अज ठीक 90 साल की हो चुकी है तो भी अपने आप के पूरे चंडीगढ़ वासियों वास्ते खास तौर पर फखर की गल है, मान वाली गल है कि इस वास्ते जगह चुनी गई है चंडीगढ़ क्योंकि इस तो पहला लगातार एयरफोर्स डे जोड़ा हिंडन एयरबेस से ही मनाया जाता सीगा पर पहली बार हिंडन एयरबेस तो बाहर किसी जगह एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है तो उस वास्ते जगह चंडीगढ़ चुनी गई है। सुखना लेक चंडीगढ़ से एयर शो चल रहा सीधियां लाइव तस्वीरां सी सुखना लेक चंडीगढ़ तो असीं विखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी समागम में खास तौर पर पहुंच चुके हैं। सीधियां लाइव तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हैं। तस्वीरां दे विच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। उत्थे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी इन्हां तस्वीरां दे विच वेखे जा सकते हैं। खास तौर पर इस समागम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उत्थे वड्डी गिनती दे विच चंडीगढ़ वासी पंजाब तो लोग पहुंचे हुए हैं, होरनां स्टेटां तो लोग खास तौर पर एयर शो नूं देखण वास्ते पहुंचे हुए हैं क्योंकि ये नेड़े दे लोकां वास्ते चंडीगढ़ वासियों वास्ते फखर वाली गल है, मान वाली गल है कि पहली बार हिंडन एयरबेस तो बाद किसी जगह ये एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। उस वास्ते जगह चुनी गई है पंजाब ते हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। सुखना लेक चंडीगढ़ ते दरअसल अज एयर शो किया जा रहा है। सीधियां लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं तुहानूं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। उत्थे ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी खास तौर पर पहुंचे हुए हैं। इस तो इलावा हरियाणा ते पंजाब के गवर्नर भी इस समागम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। चंडीगढ़ तो MP किरण खेर भी तस्वीरों के विच नजर आ रहे हैं। इस तो इलावा एयरफोर्स के जोड़े वड्डे अफसर है, वड्डे अधिकारी है, वह भी तस्वीरों के विच वेखे जा सकते हैं। इस तो पहला गल की जाए तो चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन पर पहला परेड हुई, उस तो बाद एयर शो का आगाज होया सुखना लेक चंडीगढ़ से। इस तो पहला की गल की जाए लगातार हिंडन एयरबेस से ही एयरफोर्स डे मनाया जाता सीगा, उत्थे परेड हुंदी सी, उत्थे इस तरह का एयर शो हुंदा सीगा ते पहली बार हिंडन एयरबेस तो बाद किसी जगह ये एयर शो हो रहा है। That's an inside view of the Me-17 B5 helicopters. That's the ensign formation. The ensign formation carrying the national flag and the Air Force ensigns. What a beautiful aerial view, pre-recorded before they arrive onto the main venue where the audience is being seated today. भारतीय वायुसेना नवीनतम हथियारों, लड़ाकू विमानों से दक्ष है। ये किसी भी तरह की विषम परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है ताकि देश पर कोई आंच न आए। That's the first formation, the ensign formation, trooping the national flag and ensigns of the Indian Air Force. The formation is being flown by 152 helicopter unit, also known as the Mighty Armor. The formation led by Wing Commander Vishal Jain. And ensign 3 in big formation.
unit actively participated during the Kargil conflict, and its aircrew led first aerial attacks on the Tiger Hill and Tololing to push back infiltrators from the Indian soil during Kargil operations. And that's an inside pilot's view from the cockpit. That's the light combat helicopter. The Prachand. The indigenously developed light combat helicopter, the latest addition in the arsenal of the Indian Air Force, recently inducted on 3rd of October 2022. Led by Group Captain Deepak Bishnoi. And now you can see the captain of the aircraft. Yes, that is the Tejas aircraft coming with a thunder. Tejas in the sky. Group Captain Dinesh Kumar Dhankar in command of the aircraft. This is a pre-recorded shot just to give you an insight from the pilot's point of view. तेजस का आंतरिक व्यू आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ग्रुप कैप्टन दिनेश कुमार धनखड़ इसे लीड करते हुए। Tejas, the new generation multi-role aircraft capable of carrying the state-of-the-art air-to-air and air-to-ground weapon systems. And there, in the skies of Sukna Lake, Tejas. Aircraft in command of Group Captain Dinesh Kumar Dhankar. अपनी मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध तेजस multi-role fighter. Its induction significantly enhances both the offensive and air defense capabilities of the Indian Air Force. The platform is incredibly maneuverable and it's a lethal dogfighter. अपनी वेग और गर्जना के साथ तेजस और अब आपके सामने And that's the yellow painted aircraft of the yesteryears Harvard. The Harvard you see today is the one of the oldest aircraft to take to the skies is Harvard that you can see onto your television screens. The aircraft is now part of our heritage flight and depicts the Indian Air Force's journey over the past 90 years. It reminds us of the Indian Air Force's humble beginnings while inspiring the future generation. भारतीय वायुसेना का एक प्राचीनतम विमान आकाश में दृष्टिगत है। हार्वर्ड एयरक्राफ्ट हमारी विरासत का हिस्सा है जो भारतीय वायुसेना के 90 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। 1989 में ये एयरक्राफ्ट डीकमीशन्ड हुआ और 2015 में पुनः रीस्टोर कर विंटेज फ्लाइट के रूप में ये उड़ान भर रहा है। The aircraft, flown today by Wing Commander Amit Dhupaukar and Wing Commander Anand Kumar Singh. They both are qualified flying instructors in the Indian Air Force. The
The aircraft painted in bright yellow, signifying its training role. जिनकी पग रज लेकर मैंने आगे बढ़ना सीखा था, उनके सूत्र उठाकर मैंने युद्धों में लड़ना सीखा था. The Howard aircraft. The Howard was long used as the advanced trainer to train a generation of Indian pilots before they went on to fly the Hurricanes and the Spitfire. The aircraft was decommissioned in the year 1989. It became part of the Heritage Flight family in 2015 after restoration. अपनी बहुत ही सधी हुई उड़ान के साथ हावर्ड एयरक्राफ्ट हवा में गोते लगाता हुआ, कलाबाजियां खाता हुआ. With the determination and technical expertise of the Indian Air Force's maintenance crew, these vintage flying machines will continue to fly and inspire future generation of aviators and engineers. waggles its wings and pays a salute to the chief guest. The aircraft waggles its wings and pays a salute to the chief guest. अपनी अनूठी प्रस्तुति के साथ इस एयरक्राफ्ट ने अपना सैल्यूट दिया मुख्य अतिथि महोदया को. The aircraft today flown by Wing Commander Amit Dhupavkar and Wing Commander Anand Kumar Singh. And now you can see the Chinook helicopters. Carrying underslung. दो चिनूक हेलीकॉप्टर M777 तोप को लेकर आते हुए युद्ध के मैदान में ये हेलीकॉप्टर हमारी तोपों को लगातार स्थान बदलते रहते हैं, जिससे शत्रु को हमारी तोप की सही स्थिति का पता नहीं चल पाता. दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर भी ये तोपों को पहुंचाकर शत्रु को अचंभित कर देता है. This formation led by Group Captain A.P. Singh. Carrying the artillery gun. And what a beautiful glimpse you can see now of the next formation on your television screens. That's the Eklavya formation. This is a pre-recorded shot while they are making their way for the venue today at Sukhna Lake. The Eklavya formation led by Mi-35 attack helicopters flanked by the Apache and the indigenous ALH Mark IV Rudra helicopters. And there they appear onto the skies above the Sukhna Lake. The Eklavya formation flying in arrowhead. The Mi-35 being led today by Wing Commander Kapil Rajput, Apache flown by Wing Commander Munit Dogra and Squadron Leader Sagar Bisht. The advanced light helicopters flown by Wing Commander R.K. Mishra and Wing Commander R. Vishnu. The Eklavya formation. Attack helicopters, also known as the flying tanks, thanks to the heavy armor plating and phenomenal firepower. They are meant primarily for close ground support to the troops in the thick of the battle. Keeping up with the ethos of the Indian Air Force, we take pride in And that's the Dakota aircraft, keeping up with the ethos of the Indian Air Force. The Indian Air Force takes pride in their heritage flight. The inside view of the cockpit, and here is the Dakota taking to the skies. aircraft is being flown by Wing Commander. We present you the Goonie bird, savior of Kashmir,
the one and the only Dakota which was at the forefront of the operations since its induction in the year 1947 through various wars right up to 1971. डकोटा DC-3 विमान जो कि 1944 में निर्मित हुआ था, इस विमान का भारतीय नाम परशुराम है, जिनको उनकी शक्ति और सामर्थ्य के लिए जाना जाता है। यह हमारी वायुसेना की परंपरा और संस्कार का ही परिणाम है कि इतने वर्षों से हमने अपनी विरासत को उदाहरण के योग्य बनाकर संवार कर संभाल कर रखा है। The aircraft being flown today by Wing Commander Siddharth Gehlot and Wing Commander Deepak Dhankar. आसमान में गर्व से उड़ता ये विमान अपनी गौरव गाथा एक बार फिर दोहरा रहा है। The Dakota, remembered by the pilot veterans as one of the finest and most forgiving aircraft in the world, and has played a sterling role in the history of the Indian Air Force. Through the many decades it served, it remained indispensable in the tasks of air logistics and transportation. The aircraft had a stellar role to play during the famous Bargam landings to move troops to Kashmir in October 1947. It was also used in the famous Tangel drop during the liberation of Bangladesh in 1971. And that was the mighty IL-76 aircraft. That's the big boy formation en route to today's spectators at Sukhna Lake. They're paving their ways through the skies of Chandigarh, now approaching the Sukhna Lake. The big boy formation comprising one mighty IL-76 along with two AN-32 transport aircraft. The formation is led by Wing Commander Jai Singh. The people of Chandigarh would be mighty thrilled to know that